गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणकम, प्रणाम और सत श्री अकाल। राइट, आज हम ग्लोबल पावर मैट्रिक्स का अगला सिलसिला देखेंगे, जिसमें हम इंडिया और चाइना का क्या इक्वेशन है इस ग्लोबल पावर मैट्रिक्स में, इसका हम डिस्कशन करेंगे जनरल विनोद भाटिया के साथ। Sir, welcome to the show today evening for the discussion on the global metrics as far as India and China are concerned. Thank you, we'll- Jai Hind to you and all your viewers. आपके श्रोताओं को सबको जय हिंद मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मुझे अच्छा लगता है आपके प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। कुछ सीखता हूँ मैं हमेशा। Oh, so thanks a lot. We learn quite a bit, and I'm sure our viewers also learn. बहुत सीखते हैं। ये जो ग्लोबल मैट्रिक्स जो हमने बनाया है, ये इट इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये मैट्रिक्स कल्पना ही नहीं है, एक्चुअली ऑन ग्राउंड ये प्ले आउट हो रहा है। इससे पहले कि मैं आपका व्यूज लूं और चाइना के बारे में, मैं 5-6 मिनट में एक आई सेट द स्टेज कि हमने पिछले 2 एपिसोड में क्या बात किया था और आगे इनके क्या ये कहाँ हम लेके जा सकते हैं। I'll show a couple of slides and then we'll take it on from there. Right? सबसे पहले सर, ये अभी देखा गया है ये, और ये निश्चित है तकरीबन कि हमारा जीडीपी बढ़ने वाला है, और एज पर जापान काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ये हमारा जीडीपी एज अर्ली एज 2025 जापान को क्रॉस करने वाला है, और आगे जाके उनका अनुमान है कि 2030 तक हमारा जीडीपी $7 ट्रिलियन हो जाएगा। एंड दिस हैज आल्सो बीन echoed बाय द ड्यूश बैंक इन अ पेपर, एंड मॉर्गन स्टैनली हैज आल्सो echoed it. And if this happens, and I don't see why it can't happen, because जैसे मैं हर बार बताता रहता हूँ, अगर आप जापान, चाइना और जर्मनी का आप लोगे एग्जाम्पल, these three were actually broken economies by the end of Second World War. China also continued to be broken till the 70s. They were all aided and reconstructed and restructured by USA and the West, and they had a peace dividend of anything ranging from about 50 to 70 years, with complete tailwind in their economic progress. On the other hand, हमारा जो प्रॉब्लम था, हमने 4-5 लड़ाई लड़ लिया इसी दौरान। We were under sanctions, we were subjected to so many natural disasters, plus our own problems, internal problems, and our growth as a nation. इसके बावजूद हम यहाँ तक पहुंच गए। आगे मेरे को कोई डाउट नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा नेशन बढ़ता जाएगा। राइट, और जैसे ये जीडीपी बढ़ता जाएगा, वी विल बिकम मोर पावरफुल। इट्स अ नेचुरल थिंग। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से वी हैव बिकम मोर सेंट्रल टू ग्लोबल अफेयर्स। ये देखा गया कि दुनिया के बहुत प्रॉब्लम इंडिया में ही सोल्यूशन है। जैसे वैक्सीन का सोल्यूशन हमारे पास था, आजकल अगर फूड सिक्योरिटी का, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी देखेंगे तो इंडिया की ओर देख रहे हैं। और इंडिया के बिना बहुत प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सॉल्व ही नहीं हो सकते। राइट, और बहुत लोगों का मानना है कि इंडिया इज चेंजिंग फ्रॉम अ स्विंग स्टेट टू अ बैलेंसिंग स्टेट। स्विंग स्टेट का मतलब जिस तरीके से इंडिया झुकता था उस तरीके वो पलड़ा बाहर ही होता था, पर एज अ बैलेंसिंग स्टेट हमारा दोनों तरफ का बोलबाला है। और मेरा मानना ये है कि आगे जाके हम, जैसे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जैसे जीडीपी बढ़ेगा हमारा शक्ति भी बढ़ेगा, ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, तब हम जाके वी विल बी अ कंट्रोलिंग स्टेट एटलीस्ट इन इंडियन ओशन रीजन। और ये बात 1 साल पहले ये कार्टून मेरे को इंटरनेट में मिला था और मैंने पकड़ के रख लिया। ये दर्शाता है खुद, और ये मेरा विचार नहीं, ये किसी वेस्टर्न कार्टूनिस्ट का विचार है कि जो 4 मुख्य देश हैं दुनिया में, यही 4 हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी कार्टून से मेरे को प्रोत्साहन मिला
कि मैं ये ग्लोबल पावर क्वाड्रिलैटरल बनाऊं, पावर मैट्रिक्स, जिसमें अलोंग द डायगोनल्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इंडिया और यूएसए के बीच में खिंचाव है, और चाइना और रशिया के बीच में खिंचाव है. यूएसए रिपल्स Russia and China. India has attraction towards Russia and has a repulsion towards China. The way things are moving, right? और ये तकरीबन self explanatory है. But it's a complicated triangle. It's a complicated matrix. अगर ये imbalance, अगर दुनिया में balance चाहिए, तो understanding and how this matrix operates is important. इसीलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया. और आज के दिन जैसे हमारा प्रधानमंत्री इज गोइंग टू यूएसए, और वहां प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ बात करेंगे और अमेरिकन सोसाइटी के साथ बात करेंगे, और उनका कांग्रेस और सेनेट दोनों हाउसेस के साथ जब बात करेंगे, इट्स इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस मैट्रिक्स. और इसके तहत और भी रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट? एंड इट हैज अ बेयरिंग ऑन चाइना, जिसके बारे में हम अभी भी बात कर रहे थे. एंड आज का विषय यही है कि इस मैट्रिक्स में चाइना का क्या होगा, राइट? और अगर आप देखेंगे तो जैसे अलोंग और डायगोनल मोदी साहब और बाइडेन साहब का मीट तो होने वाला ही है, पर साथ साथ, राइट, एक स्पेशल एनवॉय दो हफ्ते पहले चाइना का, वो गए थे प्यूटिन को मीट करने के लिए टू रिजॉल्व द यूक्रेन वॉर. तो उस डायगोनल में भी कुछ हो रहा है. और इसी वक्त आज या कल, इनफैक्ट टुडे विद इन द पास्ट 24 आवर्स, Blinken, the Secretary of State, U.S. Secretary of State, and Xi have met. So along the China-US side also there is some progress. और वैंग ही जो फॉरेन मिनिस्टर था चाइना का, उसने एक एडिटोरियल निकाला ग्लोबल टाइम्स में. और ग्लोबल टाइम्स ने सिर्फ ये एडिटोरियल ही नहीं, दो तीन और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स aimed at this power thing, and especially for India, they have brought out, which I want to just highlight to you. But before that, मैंने 1962 और 2020 का जो ऑपरेशंस है उसको मैंने स्टडी किया और तुलना किया. और मैंने ये स्टाफ कॉलेज एस्पिरेंट के लिए मैंने एक लेक्चर लिया था ऑन यूट्यूब ओनली 4 दिन पहले. और माय फाइंडिंग्स आर दैट इंडिया एंड चाइना, देर कुछ रिलेशनशिप में कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं. वो क्या कॉन्स्टेंट्स हैं? चाइना मानता है कि द बैलेंस ऑफ पावर इज बिटवीन चाइना, द सोवियत यूनियन, अभी रशिया, एंड द यूनाइटेड स्टेट. ये हिस्टोरिकली 1950 से लेकर. और उनका मानना ये है कि इंडिया इज द वाइल्ड कार्ड टू बी केप्ट इन चेक थ्रू परसुएशन और कोअर्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी थ्रू कोर्सिव मेथड्स का मतलब बाय फोर्स. और इंडिया के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना चाहिए दैट चाइना इज अ डोमिनेंट पावर इन एशिया. हमें रिमाइंड करना चाहिए बार बार कि भाई आप बड़े नहीं हो, हम बड़े हैं और आप छोटे हैं. और चाइना हैज ऑलवेज ट्रेडिशनली व्यूड इंडिया एज अनइक्वल एंड अनट्रस्टवर्दी, राइट? और पाकिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक अलाई टू कीप इंडिया इन चेक इन साउथ एशिया. Or this is their broad strategy through which they have been operating with India. But आज कल के दिन ग्लोबल टाइम्स का व्यू देखिए. They feel the US and Indian interest in strengthening the strategic partnership is to balance China, कि उंगली उनके ऊपर आ रहा है. The US is not concerned about India's position on the Russia-Ukraine war, or whether India will buy more Russian weapons and oil. And USA is also remaining silent on the issue of human rights suppression in India. कि इंडिया को सब माफ है, पर चाइना कुछ भी करे उसके ऊपर उंगली उठ रहा है. ये उनका बड़ा मुद्दा है इसमें. The US intent is to rope India to counter China and Russia is wishful thinking. ये सोचते हैं कि ये होगा नहीं. India as a regional power that upholds strategic autonomy is unwilling to be a pawn of any major power and does not want its national interest to be held hostage. इनका मानना ये है, और कुछ हद तक सही भी है, कि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रखेंगे और किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे और किसी का पॉन नहीं बनेंगे, राइट?
उनका ये भी बोलना है कि नो एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल चेन कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट चाइना. द एंड रिजल्ट ऑफ बैलेंसिंग चाइना विल बी द लॉस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन द बैलेंस. वो बोल रहे हैं कि हमारा इंडिया का सेल्फ इंटरेस्ट खराब हो जाएगा, एंड द स्टेटस ऑफ China and India in the world will depend on their respective attitudes towards embracing the world. इसमें सबसे बड़ा बढ़िया बढ़िया पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, जिसके ऊपर आपका विचार भी चाहिए, कि इन्होंने बोला कि इंडिया एज अ रीजनल पावर. ये सब पहले बार मैं सुन रहा हूं फ्रॉम चाइना कि दे हैव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग इंडिया एज अ रीजनल पावर. लिख रहे हैं ये. एंड ये लास्ट जो बोल रहे हैं कि स्टेटस ऑफ इंडिया इन चाइना इज द एटीट्यूड ऑफ एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड. सो देयर इज सम चेंज इन दिस होल स्टोरी. और इसी के बारे में हम आज आपसे बात करना चाहते हैं. मैं आप कृपया ये बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप चाइना के, इंडिया चाइना एंड ये मैट्रिक्स के ऊपर फोकस कीजिए. उसके बाद वी कैन टॉक ऑफ चाइना, यूएसए एंड चाइना रशिया, बट इंडिया एंड चाइना इज द प्राइम इवेंट. प्लीज टेक ऑन सर. थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पर, एंड गुड स्टार्ट. मैं उसमें एक चीज थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि ये P3 में अभी इंडिया का जो हेफ्ट है, जो हमारा भाव है, जो हमारा स्टैंडिंग है, वो क्यों है ना. आज जैसे हमने बोला कि चाइना ने एक्नॉलेज किया, इंडिया आज एक रीजन, रिस्पॉन्सिबल, रिसर्जेंट पावर है, रीजनल लीडर है, और रीजनल पावर है और ग्लोबल लीडर है. ठीक है, चाइना रीजनल पावर तो बोला, ग्लोबल लीडर नहीं बोला अभी तक. तो इंडिया आज एक ग्लोबल लीडर भी है. और ये क्यों है? आज हम, इंडिया है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया है लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, इंडिया है फोर्थ लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस, इंडिया है फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया है सेवेंथ लार्जेस्ट लैंड मास, इंडिया वन ऑफ द 9 न्यूक्लियर नेशंस. तो ये इंडिया है. और इंडिया आज सेंट्रलिटी है इंडिया की, कि हम यूएनएससी के हिस्सा ना हो, परमानेंट हिस्सा ना होते हुए भी आज कोई भी जो बैलेंस ऑफ पावर जो गेम है वर्ल्ड की, बिना इंडिया के नहीं हो सकती है. एंड इंडिया, एज आपने बिल्कुल ठीक बोला, एक बैलेंसिंग पावर है. जहां तक इंडिया चाइना रिलेशन का सवाल आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये, कि इंडिया चाइना रिलेशन इज अ सेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. ठीक है, इंडिया चाइना के बीच में कोऑपरेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, और साथ साथ कंपटीशन भी है, कन्फ्रंटेशन भी है, और कन्फ्लिक्ट भी है. तो हमारे शेयर्ड कंसर्न्स भी हैं, हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट भी हैं, और कन्फ्लिक्ट भी है हमारी. और मैं ये सोचूंगा जो मेजर कन्फ्लिक्ट है हमारी इज फॉर द सुपरमेसी इन द ग्लोबल ऑर्डर. अभी चाइना जो है वो चैलेंज कर रहा है यूएसए को फॉर द बाइपोलर वर्ल्ड, राइट. यूएसए वांट्स अ स्टेटस को एज अ unipolar world. India, on the other hand, is more accommodative, more responsible, and we want a multipolar world. And China ने मेरे ख्याल से जो 2020, आज से 3 साल पहले जो मई 4th of May को किया उन्होंने, जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, मेरे ख्याल से वो एक 1962 हिमालयन ब्लंडर है चाइना की तरफ से. इंडिया जो है उसके पास अभी सब कुछ है, मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर हमारी ग्रो कर रही है, हम एक टेक्नोलॉजिकल पावर भी बनने वाले हैं, और आज के जियो स्ट्रेटजी में हम एक मेजर फोर्स टू रेकन विद है, जिसको हम कहते हैं. तो ये मेरे ख्याल से ये 62 मोमेंट था चाइना का, उनका हिमालयन ब्लंडर हुआ मई 2020 में, आज से 3 साल पहले लगभग, जो उन्होंने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करी. उन्होंने सोचा नहीं था कि इंडिया एक इतना रिजॉल्व, स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व दिखाएगा और उनको जवाब देगा, उनको फोर्स करेगा पेंगोंगसो से, गलवान से, हॉट स्प्रिंग से वापस जाने को, जो आज तक कभी नहीं हुआ 79 के बाद. ठीक है, तो ये इंडिया का जो स्टेटस है, ये बहुत जरूरी है समझने को, कि आज जो बैलेंस ऑफ पावर गेम है, और आपने बिल्कुल ठीक बोला, इंडिया इज अ बैलेंसिंग पावर. लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना जो चैलेंज कर रहा है यूएसए को, एक सेटिस्फाइड पावर है यूएसए, और एक डिससेटिस्फाइड इमर्जिंग पावर है चाइना. और पिछले 500 साल में दुनिया में
16 ट्रांजिशंस ऑफ पावर हुई है, वर्ल्ड पावर, उसमें 12 जो हुई हैं वो वायलेंट हुई हैं, सिर्फ 4 पीसफुल हुई हैं। और इंडिया को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अगली जो ट्रांजिशन वर्ल्ड पावर होती है, जब भी होती है वो, उसमें इंडिया और चाइना नेबर्स हैं और हमारे पास एक 3488 किलोमीटर का अनसेटल्ड बॉर्डर है। तो हमको अपने इंटरेस्ट बैलेंस करने पड़ेंगे। राधा, मैं एक कदम हो गई और भी आगे जाऊंगा कि इंडिया हैज द हेफ्ट टू मेक श्योर दैट वी हैव अ बैलेंस ऑफ पावर, नॉट गेट नॉट द बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। और बेस्ट रहेगा अगर आप बैलेंस कर ले, बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट के बीच में। तो जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि चाइना ने हमको पुश करा है टुवर्ड्स अमेरिका। नहीं तो 2019 अक्टूबर तक भी देखिए आप, जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग महाबलीपुरम में आए थे और 19 टाइम्स हमारे प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिले थे पिछले 2014 से 2019 तक 5 साल में, विच इज एवरी 3 मंथ्स। और बड़ा ग्रोइंग रिलेशनशिप था हमारा, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। और हमारे जो 65 मिलियन यूथ है वो 62 को भूल चुके थे लगभग, लेकिन गलवान ने उनको एक एंटी चाइना बना दिया फिर से। तो चाइना ने एक बहुत बड़ी गलती की है, विच चाइना विल हैव टू पे इन दिस बैलेंस ऑफ पावर गेम। I think you made a very significant thing, sir. That China has made a strategic blunder by pushing India towards USA. हिमालयन One, ब्लंडर। Himalayan blunder. I think they have also made another blunder by infusing strategic confidence into India. अगर आप देखोगे, मैं महाबलीपुरम जब शी जिनपिंग साहब आए थे, मैं चेन्नई में ही था, उनको उनका कैवलकेड को भी देखा, गाड़ियों को जाते हुए। वो दृश्य अभी भी है। उस वक्त इंडिया वाज नॉट सच अ ग्रेट पावर। हम खुद नहीं मानते थे कि हम ग्रेट पावर है, पर अभी हम मानने लगे 3 साल के बाद कि हम ग्रेट पावर है, राइट? तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, राइट, जैसे हमारा शक्ति बढ़ता जाएगा, और आप ये देखिएगा कि चाइना इज ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स। ऐसी बात नहीं है कि चाइना आगे बढ़ रहा है। चाइना इकोनॉमिक का प्रॉब्लम है, उनका आबादी का प्रॉब्लम है, रिसोर्सेस का प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तो अगले 5, 6, 8, 10 साल, पीरियड ऑफ अबाउट 5 to 10 years, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया और चाइना का गैप कम होता जाएगा। उस हालत में हाउ डू यू सी इंडिया चाइना रिलेशनशिप प्रोग्रेसिंग फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे? देखिए और हमारे rather, रिलेशनशिप, how do we approach this relationship so that, like you said, we should keep our balance of interests in mind and not balance of power? चाइना जो है इंडिया को कंटेन करना चाहता है, इसमें हमें कोई शक नहीं। स्ट्रेटेजिक कंटेनमेंट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ चाइना's एम्स, स्ट्रेटेजिक एम। देखिए तभी उसने इन्वेस्ट कर रखा है जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। हमारा जवाब है डायमंड्स ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड्स। लेकिन जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, क्योंकि चाइना के पास आज की डेट में ज्यादा इकोनॉमिक माइट है, ज्यादा मिलिट्री माइट है, ज्यादा टेक्नोलॉजिकल माइट है, इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे कोई शक नहीं है इसमें। या इसमें डाउट ही नहीं है हमें। आज की डेट में मैं कह रहा हूँ, आज की डेट में तो चाइना ऑल्सो रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ and we have to deal with China from position of relative strength. Now, how do we create that? is मैंने आपके प्लेटफॉर्म में बोला भी था, हमें एक 4D स्ट्रेटजी चाहिए इसमें, और वो आपके प्लेटफॉर्म में पहले बता चुका हूँ, बड़े छोटे शब्दों में बताऊंगा। डिफेंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, डोमिनेट द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, चाइना के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं। डेफ्ट डिप्लोमेसी टू बाइंड टू बैलेंस विद नेशंस लाइक व्हाट, अमेरिका, यूएसए, बाकी नेशंस। एंड द फोर्थ व्हिच यू ब्रॉट आउट वाज deny space in the neighborhood, right? Neighborhood. तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी है ये अभी फ्रक्टिफाई हो रही है, इट इज ऑलरेडी इन प्लेस, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर इस स्ट्रेटजी को देखा जाए तो चाइना इसको काउंटर करने के लिए उसको बहुत सारा अपना इकोनॉमिक माइट लगाना पड़ेगा। तो वी हैव रेज्ड द कॉन्सिक्वेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ चाइना, हमें ये भी देखना पड़ेगा। इंडो पैसिफिक में चाइना इज अ प्लेयर, हमें कोई शक नहीं होना चाहिए उसमें। Never underestimate your adversary and never ever underestimate China. अगर हम उसको underestimate करेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे, ठीक है?
मैं ये नहीं कह रहा कि आज की डेट में हम चाइना से दंगल कर सकते हैं, हम चाइना से दंगल करने के लिए नहीं है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए। और चाइना को सोचता है कि अगर वो सलामी स्लाइसिंग कर सकता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में और बाकी रिलेशनशिप में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो ये गलत सोचता है। ये वो इंडिया नहीं है जो 62 में था, ये इंडिया है एक हर एक किस्म से अलग जवाब दे सकता है, हर डोमेन में जवाब दे सकता है, तो चाहे वो नई डोमेन्स क्यों ना हो। ठीक है, हमारा उनसे ट्रेड है, हमारी पॉलिसी जो है प्रो इंडिया होनी चाहिए, ये कोई शक नहीं है, और हमें ग्रेट गेम में इन्वॉल्व होना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट बेसिकली। बट यूएसए जो चाहता है, जो ग्रेट गेम में इन्वॉल्वमेंट हमारी एज अ काउंटर टू चाइना, सॉरी, वी आर नो स्पॉन, वी आर नो प्रॉक्सी, हम कोई बड़ा यूक्रेन नहीं है, ठीक है, हम या इंडिया है, we understand what the world is about। ऐसे लोग बोलते हैं ना हमारे स्ट्रेटेजी कल्चर नहीं है, अरे गना शॉट को देखो आप, स्ट्रेटेजी कल्चर कैसे नहीं है हमारे या पास। ये तो स्टडी हाँ, कल्चर है सर। ये स्ट्रेटेजी कल्चर है। आप देखिए आपके जो प्रीवियस जो दो स्पीकर आए, उससे पहले स्पीकर आए, बड़ा अच्छा लगता है, बाकी भी प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, और यूएसए जो है वो हमको अपने फोल्ड में लेना चाहता है, हम एडवांटेज लेंगे। आज हमारे पास टर्म्स है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, उनको ऐसा रोजिंग वेलकम मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि इट इज द पावर ऑफ इंडिया। देयर इज ठीक इंडिया, है ना? यस। तो चाइना को उससे अभी ग्लोबल टाइम्स को आपने जो उसका जो सारांश दिया है, जो उन्होंने लिखा है, क्यों रिकग्नाइज कर रहे हैं रीजनल पावर को? दे आल्सो वांट टू रिकंसाइल, क्योंकि अगर चाइना को देखें, चाइना के जो कंफ्लिक्ट पॉइंट्स है वर्ल्ड के, फ्लैश पॉइंट्स फॉर कंफ्लिक्ट हैं, वो चाइना सेंट्रिक है। साउथ चाइना सी, ईस्ट सी, ताइवान, कोरिया, इंडिया, यूएस, इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वो चाइना भी मतलब इतना वो नहीं है, हम अपना टू फ्रंट वॉर करते रहते हैं, चाइना की तो 5 फ्रंट वॉर है। नहीं नहीं, वो खुद बोलते हैं सर, खुद बोलते हैं 4 फ्रंट वॉर। मैं दे 5 हैव बोलता हूँ मैं। स्पोकन अबाउट। ओके, और उनका इंटरनल टर्मोइल जिसको छुपाते रहते हैं, कब तक छुपाएंगे? कभी तो आएगा बाहर। हाँ, तो हमको वो सब फैक्टर करके चलना चाहिए, बट वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, राइट? वी राइट, शुड बी एनहांसिंग आवर कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज इन ऑल डोमेन्स, सिर्फ मिलिट्री डोमेन में नहीं, इकोनॉमिक डोमेन में खास तक। जब तक हम तक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं होगी हमारे पास मिलिट्री और टेक्नोलॉजी अपलिफ्टमेंट नहीं करेंगे अपने आप को, तो एंड वी हैव टू परचेज पीस थ्रू प्रिपेयर्डनेस। आई एम नॉट सेइंग वेज अ वॉर, सॉरी, या armed forces is not going to wage wars, nations wage wars, it's a last resort। we have to purchase peace through preparedness, और हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिफेंस में। चाहे आज हम यूएसए से इंजन लेके आए, प्रेडेटर ड्रोन्स लेके आए, रशिया से हमारा 65% इक्विपमेंट आना है, हमको अपने इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे, एंड अ मिलिट्री, an enabled military can only pressurize China to not do any more salami slicing and deter China's aggressive behavior, which is a major challenge for us। ठीक है ना? तो ये मेरे ख्याल से इंडिया चाइना रिलेशन जो है हिंज करते हैं डिफेंस पे, वैसे ही यूएस इंडिया रिलेशन डिफेंस पे हिंज करते हैं, रशिया इंडिया रिलेशन डिफेंस में हिंज करते हैं। डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फुलक्रम फॉर हिंजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है ना? तो चाइना ग्रोइंग है, हमें कोई उसमें नहीं है, चाइना का वेलफेयर हो, अच्छा लगेगा हमको, बट हमारी वेलबींग जो 1.45 बिलियन पीपल की है, वो भी जरूरी है। Yeah, I think, sir, you made a very interesting point. In fact, a very telling point कि जैसे अगले 5-10 साल हमारा शक्ति बढ़ता जाएगा, हमारा अर्थव्यवस्था का शक्ति बढ़ता जाएगा, हमारा डिफेंस का, we have to invest more in our defense. That's one. We have to invest more in defending our interests, and we have to get into the 4D strategy, which we have spoken earlier also, right? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सब करने के लिए हमारा खुद का रवैया बदली करना चाहिए। अगर हम पीछे देखते रहेंगे तो ये पीछे के हिस्से ही आते रहेंगे। आप देखिए, खुद यूएसए के अंदर एक बदलाव है, हाउ दे व्यू इंडिया। अब चाइना के अंदर भी बदलाव है, हाउ दे व्यू इंडिया। अगर उनके अंदर बदलाव है, हाउ दे व्यू इंडिया, हमें भी बदलना चाहिए कि हाउ वी व्यू द टू ग्रेटेस्ट और द बिगेस्ट पावर्स टुडे ऑन द अर्थ,
and say that, look, you are someone who's got a voice and we need to behave accordingly. I think that is a major thing which you have pointed out. Right. Now let's shift this focus in this matrix. थोड़ा हम we will go to China. China has an equation with Russia, which is supposed to be no holds barred friendship, right? And that has been growing for the past 1 year. But on one hand, और दूसरे सिरे पे देखेंगे तो there are reports coming out that this relationship has plateaued out. आप किस तरीके से ये रिलेशनशिप को देखते हैं, क्योंकि वी हैव अ इक्वेशन विद रशिया एंड दैट इक्वेशन विद रशिया and the equation with China is all every time at conflict with each other. And so this triangle of Russia, China, and India has its own problems. How do you see this from a Chinese perspective as well as an Indian perspective? I mean, you can take it from whichever way you want. हाँ, देखिए, रशिया इंडिया चाइना का ट्राइलेटरल RIC. RIC, yes, it was spoken of some time back. हाँ, तो RIC ट्राइलेटरल है, इट इज नॉट था, इट इज है. लेकिन क्योंकि चाइना ने जो गलती करी है, वो ट्राइलेटरल जो अभी है उसका वैल्यू कम हो गई है, उसकी जो वैल्यू बोलूंगा, उसकी जो वेटेज कम हो गई है, ठीक है ना. तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रशिया और चाइना की इंटरडिपेंडेंस है, और मेरे ख्याल से हमें रशिया को डिपेंडेबल पार्टनर हमेशा से रहा है, और हमारे 65% लगभग हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो रशियन ओरिजिन का है, और हमको ये देख के चलना पड़ेगा कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ सर्व होते हैं. रशिया के साथ सर्व होते हैं तो हमें रशिया का करना पड़ेगा, लेकिन वी कैन नॉट क्रिएट अ डिवाइड. इट इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थिंग कि अगर चाइना और रशिया के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं और हमारे रशिया के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है. ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ. मैं मानने को तैयार हूँ कि India should look at India-Russia relations as we always looked as a dependable strategic partner of Russia, and we also have to understand that 65% of our military hardware comes from Russia, and Russia needs our money. We are the largest importer of arms. Let's face facts. आत्मनिर्भरता है. जब तक ये फ्रक्टिफाई करेगी, आगे बढ़ेंगे, तो टाइम लगेगा. तो उसको जब तक टाइम नहीं लगता, हमको डिपेंड करना पड़ेगा बाकी के इक्विपमेंट पे, जो हमारा लीगेसी इक्विपमेंट है, जो इक्विपमेंट हमारे पास है. तो रशिया एज अ डिपेंडेबल पार्टनर, वी विल हैव टू रिस्पेक्ट दैट थिंग, एंड वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे कि रशिया चाइना के बीच में बहुत ज्यादा हो रहा है. नहीं, रशिया ऑल्सो नोज कि इसके इंटरेस्ट कहाँ पर है. अगर आप देखें, रशियन ऑयल भी तो हमारे पास आ रहा है. हमने रशिया को सपोर्ट किया है और हमेशा करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे. हमारा जो इंटरेस्ट है, जैसे हमेशा से बोलता हूँ, चाहे यूएसए के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, हमारा जो पैरेलल इंटरेस्ट है वो साथ चलते रहेंगे. हमारी इकोनॉमी देख लीजिए चाइना के साथ भी आज $135 बिलियन ग्रोइंग, वैसे यूएस के साथ भी. और रशिया, और ये भी एक चीज और आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं, चाइना और यूएस इंटरडिपेंडेंट है. $535 बिलियन की इकोनॉमी उनकी. तो मैं ये सोचता हूं कि चाइना और रशिया को एक दूसरे की भी जरूरत है, बिकॉज इफ वी आर अ बैलेंसिंग पावर फॉर यूएसए, रशिया इज आल्सो बैलेंसिंग पावर फॉर चाइना. ठीक है, तो ये वर्ल्ड की जो पावर गेम है ये बहुत जरूरी है, और रशिया को अभी चाइना की सपोर्ट चाहिए फॉर द यूक्रेन वॉर, एंड इट इज अ वॉर व्हिच इज अन अनएंडिंग वॉर, अनफिनिश्ड वॉर, एंड वी विल हैव टू प्ले आवर कार्ड्स वेरी वेल, व्हिच वी आर डूइंग ऑलरेडी. So that's very realistic, sir. So now आपने ये बोल दिया कि रशिया, इंडिया, चाइना का ट्रायंगल किस तरीके से ये चलेगा, right? How do you see the USA, China, and India triangle progressing? Because this is a triangle which will increasingly, like, both are wooing us, and this will become complicated also. Right, I'll not talk of the China, US, and Russia. That I'll talk tomorrow. But I would like you to give a little overview of the this triangle. That is China, USA, and India. ठीक है, यूएस और इंडिया के तो कांग्रेस और कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है ही है, उसमें कोई मतलब काफी इंटरेस्ट है. इट इज नॉट ओनली आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बट वी हैव
शेयर्ड इंटरेस्ट, वी हैव म्यूचुअल कंसर्न्स, ठीक है, इंडो पैसिफिक में है, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर में है, लेकिन हमको यूएस का सपोर्ट और चाहिए. इंडिया हैज टू सिट ऑन द हाई टेबल इन द कमिटी ऑफ नेशंस. जो इलीट क्लब्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, चाहे वो आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, उसमें हमें हमें सीट चाहिए, हमें वॉइस चाहिए उसमें. एंड यूएस हैज टू इंश्योर दैट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, ठीक है. तो यूएस और इंडिया के तो कॉमन में इंटरेस्ट है ही है. तो मुझे से आज देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर, उनको क्या राउजिंग वेलकम मिल रहा है, मेरे ख्याल किसी हेड ऑफ स्टेट को बहुत सालों में नहीं मिला होगा ऐसा एज अ राउजिंग वेलकम जो उनको मिला है. उनकी 8th विजिट है, फर्स्ट स्टेट विजिट उनकी. लेकिन चाइना और यूएसए के बीच में रिलेशनशिप है वो इंटरडिपेंडेंस का है. चाइनाज इंपोर्ट्स और आज तभी वहां पर अभी इतने 5 साल के बाद उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाइना को विजिट में गए. स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है चाइना और यूएसए के बीच में. उनके चाइनीज कमीशन है, उन्होंने अभी एक पेपर निकाला है अप्रैल मई के महीने में, जहां उन्होंने बोला है कि वी शुड हैव नेटो +5 टू बैलेंस चाइना. तो यूएस इज आल्सो वरीड टू बैलेंसिंग चाइना, ठीक है. तो दे वांट इंडिया ऑन द एज अ काउंटर टू चाइना, जैसे आपने बोला ये. लेकिन हमें देखना पड़ेगा चाइना और हमारे जो इंटरेस्ट सर्व करते हैं. देखो चाइना की कंपनी इंडिया में है, हमें चाइनीज मशीनरी चाहिए. अगर हमने मेक इन इंडिया करना है तो चाइनीज मशीनरी चाहिए. अभी चाइना का जो बाकी हमारे जो कंसर्न्स है वो हमें देखने पड़ेंगे. देन 40,000 प्लस साइबर अटैक्स ऑन इंडिया फ्रॉम चाइनीज साइड फॉर 2023. तो इट इज नॉट ओनली एलएसी, बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी हमको, क्योंकि टुमारोज वर्ल्ड. एंड मैं एक चीज थोड़ा डाइवर्ट करना चाहूंगा अगर आप मुझे परमिशन दें तो. या प्लीज सर, प्लीज. जो शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जो है, उसकी 3rd टर्म जो शुरू हुई 20th कांग्रेस में, उसने सिक्योरिटी 91 टाइम्स वर्ड सिक्योरिटी इस्तेमाल करा, 91 टाइम्स, ठीक है. तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है चाइना के कंसर्न्स और चाइना की प्रायोरिटीज. चाइना की प्रायोरिटी सिक्योरिटी है. और मैं एक चीज बता जो, मतलब लेट मी टॉक ऑफ अ टर्म जियो सिक्योरिटीज, नॉट जियो स्ट्रेटेजी, जियो सिक्योरिटी. अभी जो यूएस का अम्ब्रेला है which extends all over, whether it is Japan or Europe, so it's a geosecurity umbrella basically, right? Now they want India also as part of that umbrella, okay, to counter China. But what is India's interest? That we have to see. What comes to the table we have to see. देखिए यूएसए बोलता बहुत कुछ है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ आपके आपके प्लेटफॉर्म में डिस्कस हुआ है. लेकिन जो हमारी क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमको चाहिए वो आई नहीं है. यूएसए सैंक्शन लगाता है हमारे पे. बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले जब काटसा की बात हो रही थी कि हम S-400 ले रहे थे, तो उन्होंने बोला सैंक्शन लगा. मैं लगा दो सैंक्शन, लगा दो. और आप सैंक्शन लगा देंगे, जैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसरो है, हम भी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे. 3-4 साल 5 साल लग जाएंगे. यही हुआ है. नहीं, लेट मी, आपने बोला है, आई स्टिल रिमेम्बर इन 1988. I mean, this is a true story I'm telling you now. 1988, I was in DRDL Hyderabad just before I went for staff college. My director of DRDL was Dr. Abdul Kalam. We were, making the Prithvi missile system, and we didn't have the strap-down inertial guidance system. And Dr. Abdul Kalam went to France for the French air show. When he went for, and we were under sanctions, and we didn't have this technology at all. So when he went to the French air show, and he went all around everywhere कि भाई हमें कोई inertial navigation system दे दो, सबने मना कर दिया. तो एक जगह एक स्टॉल में जब ये गए और पूछने लगे, उसने एक आदमी ने बोला इनको जरा बाहर आओ. बाहर जाके बोला कि भाई तुम मेरे से पूछ रहे हो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, और जिम्बल्स होते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी हाई टेक होते हैं. उसने बोला कि भाई मेरे से पूछ रहे हो, आप क्यों पूछ रहे हो हमसे. डॉक्टर अब्दुल कलाम टोल्ड हिम कि भाई वी नीड इट, वी डोंट हैव इट. कहता है दिस इज मेड इन हैदराबाद. This fellow was a Polish chap. So that Polish chap told him that this is made in India in a place called Hyderabad. So Dr. Abdul Kalam caught the next plane home and came straight to Hyderabad. Yeah, Hyderabad mein hi DRDL hai. He sent everyone in DRDL to search out कि कौन कौन बनाता है जिम्बल. और
एक हफ्ता 10 दिन के बाद हमने पता कर लिया कि कौन बनाता है जिम्बल। तो उससे पूछा गया कि भाई हमें क्यों नहीं बताया कि आप जिम्बल बनाते हो? उसने बोला कि आपने पूछा ही नहीं। तो चलो that was the story, and this man was giving these gimbals worldwide. So that is our internal strength. So what happened, and because of that MTCR, we got those gimbals, we got everything, and we started making the start-down industrial navigation system. जैसे हमने वो बनाना शुरू किया, सब लाइन आके खड़े हो गए और बोले कि भाई हमारा ले लो. So the point which you have made is very important. If you are put under sanctions, there is always a chance that you will become self-reliant, and after that, to hell with everyone else, right? So I think in मैं this context, यू नो yeah, कैन please, sir. ऐड सेंटेंस ओनली। Yes, sir. आई थिंक हमारे जो टेक्नोलॉजी है और एमसीए में हमको उसको मैप करना चाहिए। हमारी Yes. मैपिंग में हमारी कमी है। यू डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेकिन हमारी मैपिंग में भी कमी है। बहुत सारी चीजें बोइंग की यहाँ बनती है, नहीं नहीं, बहुत बहुत सारी यहाँ होता है sir. हाईटेक चीजें यहाँ बनती हैं। देखिए आजकल आजकल एक नेटवर्क वर्ल्ड है। अगर वो 12 घंटे इंडिया में काम कर रहा है तो 12 घंटे यूएसए में काम कर रहा है, ठीक है। वो जब यहाँ इंडिया में शॉप क्लोज कर रहा है शाम को 9 बजे, तो वो सुबह 9 बजे वहां से शुरू कर रहा है काम। वहाँ शुरू कर रहा काम हूँ, तो हाँ वही हो रहा बिल्कुल है, सर. नेटवर्क वर्ल्ड चाहे वो कहीं भी बैठा हो, काम तो वही हो रहा है। तो हमको ये टेक्नोलॉजी को मैप करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है हमारा। और जो हमारी जो टेक्नोलॉजी विजन है 2030 की, उसमें हमको डिफेंस को एक प्रायोरिटी दर्जा देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी विजन 2030। Yes. सॉरी आई एम There's no डाइग्रेसिंग। doubt, sir. No, no, sir. No, it's good we digress because हमारा जो, as we the technological power of India, unless it kicks in, this quadrilateral also will not get कॉर्डिनेट operational. कंप्लीट नहीं होगा। देखिए कॉर्डिनेट कंप्लीट तो तब आप होगा जब जियो इकोनॉमिक पावर होगी, जियो स्ट्रेटेजिक पावर होगी, the जियो टेक्नोलॉजिकल पावर होगी, ठीक है। technological power also is there. जियो पॉलिटिकल पावर तो है And ही है। yes, and the beauty is this technological potential of India is being exploited by the Americans. I'll tell you, if you look at Microsoft, Microsoft has a research center here, which does the same research which is done in USA. If Microsoft can tap the technological power of India sitting in India, why can't India tap its own power? And that, जो आपने बोला कि the potential of India and the technological mapping of India is I think, a very important thing to realize our potential. And this potential has to be oriented towards defense, जो second point आपने बोला, so that your defense potential is increased, because there is no power which has risen without a self-reliant or Atmanirbhar defense. And defense as a share of our overall power matrix and our security consciousness has to come in a big way, because कल के दिन अगर आप regional power बनना चाहते हो, तो you have to dominate the oceans, and dominate the oceans you can only do through self-reliant technology and the self-reliant armed forces. It can't be done through diplomacy and economy. So इसके ऊपर आप जरा विचार दीजिए, and then we will take on a few questions, sir. इसमें ना प्राइवेट प्लेयर्स बहुत जरूरी हैं। जो टेक्नोलॉजी डोमेन में इट इज नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे प्राइवेट प्लेयर। देखिए इन्फोसिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज, एंड नॉट ऑफ द इन्फोसिस जिसको आप दे दीजिए, ये प्राइवेट प्लेयर्स को अगर हम उनको नहीं लाएंगे बीच में अपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स के बीच में या टेक्निकल विजन के बीच में, तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी आर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ पूरा हम कंसोलिडेट नहीं कर रहे। Yeah. So uh, how do you see China acting in this neighborhood uh, as we grow? How do you see that? Because that's the last question, and because that will be an important thing in the power matrix. Why I'm asking this question is China has a great GDP, and it is already economically strong, but it has its problems. जैसे आपने बताया, internal problems, which, and the fact that in the 20th Party Congress, Xi Jinping has used security 91 times, and he's repeated the whole story in the 2 sessions in March, right? And as India is changing, China is also changing. So how do you see in China behaving in the future towards India? देखिए चाइना की स्ट्रेटजी तो ऑलरेडी हमको नोन है। इट्स अ स्ट्रेटजी ऑफ कंटेनिंग इंडिया,
so that it does not challenge China, it does not threaten China. Though India doesn't threaten China, actually, we can grow together also. But China doesn't like that India's growth. It doesn't want India to grow. It wants to contain India. And how does it contain India? It will invest more and more in Nepal. It will wean away Bangladesh. It will wean away Myanmar. It will wean away Sri Lanka. 40% GDP of Maldives is from China. Sri Lanka के डेट देखिए, पाकिस्तान की बात नहीं करता कि पाकिस्तान तो चाइना का प्रॉक्सी है ही है, ठीक है? तो ये जो हमको अंदर उसने कर रखा है, एंड चाइना नाउ इनटू वेस्ट एशिया में भी देखिए, वो सऊदी ईरान डील करवाया चाइना ने. So we'll have to understand China's strength and not try to compete with China, right? Or we will compete, not confront China right now. Let us build our own strength because India की अपनी power है ना. अभी यूएस में देख लीजिए, every seventh American is being treated by Indian doctor. That is our soft power. 200,000 students in US. 4.2 million people contribute 6% of the US tax on the 1% people. ठीक है, तो हमको ये कंसोलिडेट करना पड़ेगा. और चाइना जो है हमको कंसोलिडेट, वो चाहेगा कि हमको वो कंटेन करके रखें, और हमको कैसे उन चाइना के चुंगल में नहीं फंसना है, ये हमको अच्छी तरह आता है. ठीक है, और चाइना को वी टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो पॉलिसी है, द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, जो चाइना की रिव्यू पॉलिसी है, उस पर तलवार टंगनी चाहिए उसके सर पे, लेकिन इट शुड बी प्रो इंडिया पॉलिसी. हमको देखना पड़ा, हमको ग्रो करना है. मतलब वी लर्न फ्रॉम चाइना, बाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, हाइड योर स्ट्रेंथ, ग्रो. तो ये मैं कहना चाहूंगा इसमें. Right, sir. Thanks a lot, sir. I think you clarified a lot of things and you have put it बहुत स्पष्ट तरीके से आपने बोल दिया, succinctly. And the biggest takeaway which you have given, again, you reiterated जो हमने पिछले बार बात किया था, is a 4D strategy, right? The most critical aspect of the India-China equation in this power matrix, if India has to handle China, is a 4D strategy. Sometime after this, towards the end of the month, or maybe in the first half of next month, I'll request you that both of us can discuss this 4D strategy on Ganashot. Each thing, what does each D, what does it mean? What is it? How can it translate itself on ground? So that we flesh out this 4D strategy. We've spoken about it twice, but we'll do it ahead. With this, with your permission, I'll take on a few questions if you don't mind. Yeah. Right, sir. The first thing, Ashish Tomar, he's done some research. It's more of a statement. I think it's a positive statement. Sir, I've collected data from CEIC for India's nominal GDP growth in last 24 years. I calculated it and we'll reach $10 trillion by third quarter of 2031 and 15 trillion by mid-year 2035. Well, that's a good thing you've done. And we also hope that happens, right? It's a positive thing. Even if it doesn't happen, let's say, even if you skip it, and that's my view, I think even if you reach 80% of that, we are on a different track altogether. Any views of yours, sir? I think that research is irrefutable. I totally endorse that. And I would also say that by 2050, we have projected to be the largest economy. Yes, sir. Yes, there's no doubt about that. So the two largest economies will be China and India, and then India and China, 2050 beyond. Yes, sir. Yes, so there's no doubt, because economic power is the key. You have economic power, every other power will follow. जिसका पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पैसा उसकी भैंस. We should also start investing in a digital transformation, because 10 years from today, you may be a 7 trillion, 10 trillion, 15 trillion economy, but technological power has to go side by side, and that is where our strength is. Our digital engineers, software engineers, our institutions of excellence, they have to grow together. And you are with the IIT. You cannot have studying in IIT and then contribute to the GDP of the US of A. Sorry. Yeah, I agree with you. That's what it is. No, I agree with you completely. There's no doubt about that. That's where we should be heading. So this is a question from Manvinder Singh. He says, what was the need for the US to send foreign secretary to China
just before our PM's visit to USA. This is what geopolitics is all about. So there's nothing else. Yeah. You you know you when you it's a game. You balance all your cards. So it has been for a long time. It was to happen earlier when the spy balloon was there. It is after 5 years, and it coincides with our prime minister visit, which was also planned. It's not yet scheduled. But this is how geopolitics is there, and everyone does that. And if you find, even when the Indian prime minister went to China, he went by Russia, went by Japan. If President Xi came to India, he came via Pakistan. So these are normal things. And the Shangri-La dialogue, if you look at it, when the Shangri-La dialogue, uh, when the Chinese foreign minister was there and the Secretary of State of the US was there, and there was almost a collision between the ships. Yes. No, I don't think that is by design. It is design. It is by But design. definitely. Yeah, there's no doubt about it. In fact, the So Chinese maneuver was by design. So, that is what we have to watch for. तभी तो मैं कहता yes. हूँ, let's look at ourselves, our interests, and not get too carried away by all the Western think tanks ने पेपर निकाल रहे हैं इंडिया के बारे में. India can take on China. India can take on China. And I take on China at my own terms. I don't. You do not tell me what my strengths are. I know my strengths. I know my weaknesses. ठीक है. आप रोज एक पेपर निकाल देते हैं कि इंडिया ये कर सकता है, इंडिया वो कर सकता है, इंडिया कैन फाइट अ वॉर विद चाइना. जो मैं लड़ना हो तब लड़ूंगा ना मैं. तुम्हारे कहने थोड़ी लड़ूंगा मैं. Yeah, there's no doubt. Right. Okay, sir. There's the next question is, and sir, if China is so weak, then why there is so much alliance, Quad, AUKUS, ITU2 to counter China? चाइना इज नॉट वीक. मैंने कभी नहीं बोला चाइना. आपने कभी बोला चाइना वीक है. चाइना के वीकनेसेस हमको, जैसे हम उनके स्ट्रेंथ देखते हैं वैसे हमको वीकनेस देखनी चाहिए. वो वीकनेस, जब वीकनेसेस देखते हैं चाइना के, हमको पता होना चाहिए कि उनकी स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस क्या है, उनकी स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स क्या है, उनकी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज क्या है. लेकिन ये कहने का मतलब नहीं है कि वो वल्नरेबिलिटीज हैं which will give us opportunities, but that does not mean कि स्ट्रेंथ नहीं है. China's confidence actually 5 times of ours. उनकी इकोनॉमी 5 times of ours है. अब देखिए उनकी इकोनॉमी देखिए. तो कहना कि उनकी वीकनेसेस हैं, we should understand the weaknesses, monitor the weaknesses, and take advantage of the weaknesses. But that does not mean that they're totally weak and we can override them. No, sorry. That's not. I think that is not. None of us ever said that. Yeah, China has got more strength than weaknesses, but they have internal weaknesses. Features हैं, fault lines हैं, और weaknesses हैं. Yeah. In this game, we have to understand their strengths and weaknesses. Our problem was earlier we were not able to pinpoint their weaknesses and play on them. Today we started discussing them and we need to play on them. That's the whole idea. So the next question by Ashish is, sir, we are 10 times the size of nuclear Pakistan economically, while China is 3.5 times India economically, considering all this. Yet we are wary of a full-blown nuclear, full-blown conflict with Pakistan. So that means why are we worried about Pakistan still? See, Ashish, why should why do you want a conflict? We have to look out for the well-being of our people. अगर आप देखें 2016 के बाद, सितंबर 2016 जो उरी हुआ, उसके बाद कोई भी टेरर स्ट्राइक, हमारी प्रॉब्लम क्या पाकिस्तान से? टेरर स्ट्राइक्स, JNK के बाद कोई टेरर स्ट्राइक नहीं हुई है. 2016 की बात कर रहा हूँ. उनकी जो टेरर स्ट्राइक्स हैं अभी बड़ी कोऑर्डिनेटेड होती हैं, बड़ी कम होती हैं, एंड हाई प्रोफाइल स्ट्राइक्स कम हुई हैं. खासतौर से 2016 और 2019 में हुई, उसका कम हो गई है. और मैं प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को कोट करूंगा. जब उन्होंने बोला था, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो और पराक्रम हुआ था, तो उन्होंने बोला आर पार की लड़ाई होगी. तो बाद में किसी ने उनसे पूछा, भाई आप तो आर पार की लड़ाई करते थे, क्या हुआ? कहते हैं लड़ाई तो आज शुरू कर दूं. अपने उसमें बोला उन्होंने. प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी बहुत दूर की सोचते थे. कहते हैं लेकिन लड़ाई खत्म कैसे करनी है, कब खत्म करनी है, कैसे खत्म करनी है, ये नहीं पता ना मुझे. So you can start a war today with Pakistan. Starting a war is not a problem. But what is the political objective? What do you want to achieve?
Why should I get involved in Pakistan at all? अभी बड़ा अच्छा हुआ है। ये देखिए अभी आप इस चैनल में देखिए जो जनशंकर बता रहे हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए कोऑर्डिनेटर। अरे हम पाकिस्तान से हाइफिनेट होकर रह गए जिंदगी भर। मैं पाकिस्तान से क्यों हाइफिनेट होऊंगा? इंडिया पाकिस्तान हाइफिनेशन को बंद कर दो। हाइफिनेट इंडिया चाइना, हाइफिनेट इंडिया यूएस, दैट इज द हाइफिनेशन वी वांट। बोलो चाहिए पाकिस्तान इज नॉट हाइफिनेशन। पाकिस्तान तो ठीक है, वो देखी जाएगी, प्रोडक्ट है, देख लेंगे उसको, उसमें क्या है। Right, sir. We as a democracy need to follow globally acceptable norms regarding labor laws, which communist China and Vietnam need follow. Does it not pose uneven competition in favor of a totalitarian state? बिल्कुल, लेकिन बट वी रिस्पेक्ट आवर डेमोक्रेसी। Yes. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इट इज ओके, माय आइडियोलॉजी इज देयर, माय वैल्यूज आर देयर, माय बिलीफ्स आर देयर। हम तो ओल्ड सिविलाइजेशन है, फर्स्ट सिविलाइजेशन है 10,000 इयर्स ओल्ड। तो चाइना एक टोटलिटरियन स्टेट है, वियतनाम है, उनकी उनकी अपनी इंटरनल वो है। ना मैं आइडियोलॉजी किसी की लेना चाहता हूँ, ना हम किसी को देना चाहते हैं। हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, वी विल अबाइड बाय दैट। अगर उसमें देखिए हर एक चीज तो नहीं मिलेगी ना। अगर आप सोचे कि आप कम्युनिस्ट करके ग्रो कर सकते हैं, नॉट इंडिया। इंडिया इज अ टोटली डाइवर्स नेशन एंड वी आर यूनिटेड डाइवर्सिटी। हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। यू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ टुडे। That is why we are what we are, a diverse society, a diverse people with a common thread, common linkages as India. I hope I've answered this question because this is a Yeah, philosophy. definitely. It needs a lot of time to actually answer it. It is subject in itself, which I am Yes. studying. I'm studying this subject because it's a very interesting subject. Why are we what we are? Is the question I keep asking myself. वो मुझे बड़ा बुरा लगता है Yeah. जब मैं रोड पे जाता हूँ, मुझे मुझे लगता है लोग वहां डोर खोलते और थूक देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, रोड पे सामान फेंक देते हैं। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बट कैन वी डू, चाइना क्या कहता है 996, यू नो 996, दे वर्क फ्रॉम 9 to 9 6 days a week लेबर। डू यू वांट टू डू दैट? कितना स्ट्रेस है, 9 to 9 6 days a week। और अगर आप लंच ब्रेक में मोबाइल देख लेते हैं तो आपको फाइन लगता है। और हम मोबाइल क्या देखते हैं? एवरी 1 minute वी चेकिंग मोबाइल। क्या हम बात कर रहा हूँ मैं, आप चाइना Yes. बनना चाहते हो? 996 है वहां Definitely. का, फिलॉसफी 996 की है, 9 to 9 6 days a week। If I may add, sir, I think, philosophically speaking, it's not only this, there are other characteristics of India which मैंने पहले बताया. Japan, Germany, and China, very disciplined states, you know, ethnically, demographically, and whatever you call it, we all talk of their disciplined approach to everything. And they've grown to where they were. But they've grown in with aid from, and tailwinds from USA. They couldn't have grown otherwise, there's no doubt about it. We have been growing despite all this. Despite being our problems, despite our fault lines, our ethnicity, बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आए, अर्थक्वेक आ गए, वॉर्स हो गए, ना हुए, हम कुछ भी करें, फिर भी we've been growing. So don't underestimate your own strength. So I think it is time that we realize where we are and what is our own strength, right? Okay. The next question is, it's a more of a request, sir. Two front war के बारे में भी discussion करें कभी. So he keeps asking if he could give a few words about the two front war likelihood, unlikelihood, and so that he is happy about it. टू फ्रंट वॉर तो है ही थ्रेट, दो एडवर्सरी हमारे, और दोनों एडवर्सरी चाइना और पाकिस्तान जो है, उनका आपस में स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है, मतलब हायर देन द माउंटेन, डीपर देन द सीज, और व्हाट यू कॉल इट, स्वीटर देन द हनी। तो वो तो जब पाकिस्तान का प्रॉक्सी ऑफ चाइना, एंड पाकिस्तान तो अभी इंडेटेड है चाइना को। मुझे नहीं पता, उसका 21 को था ना उसका IMF का लोन लास्ट डेट, Yes, yes, डिफॉल्ट yes, yes, yes. उनको मिला नहीं मिला, They've got आज मैं 1 billion. उनको मिला That नहीं। default is not happening.
they've given 1 billion. China has 1 given them बिलियन 1 billion. चाइना ने ना 1 बिलियन, तो बट चाइना ने, देखिए चाइना में तो पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा ना अपना। Yeah, लेगा। हाँ, तो जो टू फ्रंट वॉर इज अ रियलिटी, बट वी कैन, यू नो, वी हैव आवर ओन स्ट्रेटजी इन प्लेस व्हिच इज डिस्suasive डिफेंस, व्हिच इज डेटरेंस, ठीक है। विद पाकिस्तान वी हैव अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, विद चाइना वी हैव अ डिस्suasive डिफेंस स्ट्रेटजी। तो हमारी स्ट्रेटजीज इन प्लेस है, हमारी स्ट्रेटजी रीबैलेंसिंग है, और जो टू फ्रंट वॉर के लिए वी आर रेडी। इट्स नॉट दैट वी आर नॉट रेडी। तो हम पूरी तरह से तैयार है। आई थिंक रिस्पेक्ट योर मिलिट्री, द आर्म फोर्सेस आर fully aware of the threats, and I think we are fully geared for the threats, but that is one coming back to जो मैंने पहले बोला था, you have to purchase peace through preparedness, you have to invest monies, economic, you have to invest technology, and you have to invest into the soldiers, sailors, air warriors, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी वगैरह सब ठीक है, हमारे हाइब्रिड बॉर्डर्स हैं, वहां पर कुछ नहीं चलता है। टेक्नोलॉजी चलती है लेकिन पावर पैक नहीं है हमारे पास, हर चीज का पावर पैक चाहिए होता है। तो इन्वेस्टिंग इन सोल्जर्स, दैट इज इन्वेस्टिंग इन सेलर वॉरियर्स। जनशंकर हंस रहे हैं, उनको पता है हाइब्रिड क्या है। No, ये so भी no, what हाँ, you have said is something which many people don't understand. You know, you can grow, a nation can grow economically strong to a level. You know, as it becomes economically strong in the power structure, then the next thing you can, your nation becomes stronger diplomatically and your power enhances. But ultimately, if you want to be a power beyond all this, your military has to be strong. एंड इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन योर मिलिट्री, आप वहीं का वहीं रह जाओगे, आप बैठ सकते हो टोपी लगा के, राइट। ये यही बात है, हम बताते डंडा सब रहते हैं। समझते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, डंडा सब समझते हैं। बस बस तो मिलिट्री पावर हमारे पास जब तक, हमारे पास जब तक अपना लाठी नहीं होगा, कोई हमारी बात सुनेगा नहीं। So that is the fundamental question, right? Anyway, great analysis, sir. Enjoyed the discussion. Question: how can India use the Quad and its economic weight to accelerate decoupling from China in this region? That's a very interesting question. I think I you know it is a very long answer. Actually, not such an easy But answer because 40% चाइना, देखो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक चाइना का बहुत, एंड क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, नॉट एज येट, एंड वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन मिलिट्री अलायंस। क्वाड में भी कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस भी है क्वाड में। So Tushar, I think we'll have to see the value of Quad as a value of Quad. Quad as anti-China is one aspect. Quad as counter-China is the second aspect. Quad as benefiting India is the third aspect of it. So we'll have to balance it out. जापान कितना देगा क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया कितना देगा क्वाड में, यूएसए कितना देगा क्वाड में, एंड इंडिया का क्या रोल रहेगा क्वाड में। वी आर सेंट्रल, बट वील हैव टू आल्सो बिकम अ power we are a power in the Indo-Pacific, we are Indian Ocean, the Indo-Pacific. So the Quad has to depend on us a lot for success, but it's not a military alliance. Right, sir. Right. No. Oh, okay. Right. What would be the Zorawar light tank? What role would the Zorawar light tank serve at the Indo-China border? And is there a possibility for India to procure high-performance tank engines similar to the GF414 engines for the USA? इंडिया चाइना जो बॉर्डर है 348 किलोमीटर बॉर्डर में, उसमें कई जगह हाई एल्टीट्यूड में हम टैंक्स पहले से इस्तेमाल करते रहे हैं, नई बात नहीं है। लेकिन हमने क्या किया था, बिकॉज क्वांटिटीज लिमिटेड थी, वहां पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी थी पिछले 45 साल से, 25 अक्टूबर 1975। तो जो चाइना की थ्रेट थी वो मैनिफेस्ट नहीं करती थी, वी सो कॉल्ड कभी लो लेवल थ्रेट, कभी मीडियम लेवल थ्रेट, कभी हाई लेवल थ्रेट। लेकिन चाइना ने मेरे ख्याल से आपको थैंक यू बोलना चाहिए, जो उन्होंने 2020 में कर दिया, हमारी आंखें खुल गई, हमें टाइम मिल गया, और आज हम उसको क्योंकि उसको हमें थ्रेट रियल है, आज हम अपने लाइट टैंक्स वहां ला रहे हैं। बहुत सारी जगह हमें मोबिलिटी चाहिए, लाइट टैंक्स आर गेम चेंजर, और अब उसको लाएंगे। और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए,
वो अलग-अलग जगह पर है। हमारे कई कई जगह हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा यहाँ पर जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं या टेक्निकल डिटेल्स हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि चाइना जो है उनका जो टेरेन फ्रिक्शन अलग है उनकी तरफ और हमारा टेरेन फ्रिक्शन अलग है, ठीक है? तो हमारे जो है जो टेरेन फ्रैक्चर्ड सेक्टर्स हैं हमारे, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में वैलीज़ हैं। एक वैली से आओ, दूसरी वैली में जाओ, दूसरी वैली, तीसरी वैली में जाओ। वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर, सिक्किम सेक्टर, इन मिडल सेक्टर में भी अलग-अलग हैं, चाहे जोशीमठ सेक्टर है, चाहे हर्षिल सेक्टर है। तो हमें डेडिकेटेड वहाँ पर फायर पावर चाहिए, डेडिकेटेड हमको कम्बैट पावर चाहिए, इसलिए हमको वहाँ लाइट टैंक्स चाहिए जो हम उनको डिटर कर सकें बेसिकली। तो हमारे अपोजिट जो हैं, उनकी मैक डिविजन्स हैं, उनके मैक फोर्सेस हैं, और उनको डिटर करने के लिए हमको लाइट टैंक्स चाहिए, जो मोबिलिटी हो, जो एक जगह से दूसरी जगह बैलेंस इन डिप्लॉयमेंट जिसको कहते हैं और बैलेंस इन एम्प्लॉयमेंट। Uh, right. Now, sir, what benefit we will get to maintain global order with USA, which we didn't benefit as we are treated like an outsider in UNSC and considered as third world. A bit of a pessimism in what was happening. आई एग्री विद सुरू, ठीक है? मैं ये कहता हूँ कि हम ग्लोबल ऑर्डर ये ग्लोबल ऑर्डर कौन बनाता है? हमको बनाना चाहिए ग्लोबल ऑर्डर। वी शुड बी अ पार्टी टू मेकिंग द ग्लोबल ऑर्डर, नॉट फॉलोइंग द ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है ना? ये रूल्स बेस्ड जो ऑर्डर बोलते हैं हम, ये रूल कौन बनाता है? मैं थोड़ी बना रहा हूँ अभी। लेकिन अभी देखिए आप, अभी जल्दी से जल्दी देखिए हम बनाएंगे। तभी मैं कहता हूँ जितने एलिट क्लब्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, वो कहाँ पर है? यूएसए में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में। तो चाइना ये तो बोलता है, तो चाइना ने क्या किया? उन्होंने एशियन डेवलपमेंट फंड बना दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक बना दिया। तो चाइना ने ऑल्टरनेट एलिट क्लब बनने शुरू कर दिए ऑलरेडी। तो अब मैं यहाँ पर भी हूँ और वहां पर भी हूँ। तो वी हैव टू बी मेकिंग द रूल्स so that the world follows the rules. And today India is a respected country. कोई भी वो इंडिया को रिस्पेक्ट करता है, and that respect we have to make sure that we are part of rule making which benefits the world, not only global south Africa. They look us as a leader. ऐसे नहीं उसने चाइना ने रीजनल पावर बोला जो जयशंकर ने शुरू में बताया। वी आर अ ग्लोबल लीडर टुडे, वी आर अ रीजनल पार्टनर, ग्लोबल लीडर। तो हमको रूल्स बनाने चाहिए। That's the key. You have to be at the place where you start making the rules, or the rules are not made without you, without consulting you. Right? Right. That's the key. Right. So this question is for me. I'll take it on because I think we also need to include the AI impact and loss of jobs in India. How do you think this will impact the Indian economy and position? How can we generate lost jobs? Look, Kiran, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जब शुरू किया गनर्स शॉट, तो आई वॉज डूइंग once in a week regularly something on military technology and the latest cutting edge technologies, including AI, cyber, clouds, everything, EW, everything. But I didn't get enough response, right? I can talk of AI throughout the week, but I'm not getting response. That's why I've had to curtail it. I'll try once again. मैंने ऑलरेडी एआई के ऊपर एक प्रोग्राम किया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज ऑफ द सेंचुरी प्लेलिस्ट के अंदर गनर शॉट में, और एआई के बारे में सेल्फ एंड जनरल राजीव नारायणन ने एक प्रोग्राम किया था, वो भी हिंदी में, राइट? पर मेरे को वो ऑफ टेक नहीं मिला, and I didn't get any response. So I had to, I mean, I've not gone out, but I'm interested in military technology because unless we understand technology and use it militarily, we will not go anywhere. I'm very aware of that, but I'm not, I need some response. Maybe I'll restart it after I get some more traction in the shot. Right. So about US, on one hand, Blinken said they follow one China policy and don't support Taiwanese independence. And on the other hand, they are actively arming Taiwan. What's the play here? हिंदी में बताओ, इसको गुंडागर्दी कहते हैं। I think so. I think that's the fundamental thing. बोलना कुछ और है, करना कुछ और है, यही बात। उनके इंटरेस्ट है तो ठीक है, बहुत बहुत, चाहे वो साउथ चाइना चाहे ताइवान है,
देखिए आप प्रेशर कैसे डालेंगे दूसरों पे? अगर चाइना हमारे प्रेशर डाल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो यूएसए चाइना पे कैसे प्रेशर डालेगा? चाइना यूएसए पे प्रेशर कैसे डालेगा? रशिया यूएसए पे, यूएसए रशिया पे कैसे प्रेशर डालेगा? दिस इज पावर गेम, व्हाट वी टॉक अबाउट, ये पावर गेम है ये। Yeah. तो उसने क्या किया, Yeah. एक तरफ से ये कहता है कि हम तो वहां पर कुछ स्टेटमेंट करते हैं, फिर उनकी स्पीकर जो नैन्सी पॉलिसी कहती है नहीं तो क्या हो गया, वो चले जाते हैं, शी लैंड्स इन ताइवान, whatever, she has a very high profile visit, ठीक है, तो शंकर डायलॉग कुछ बोलते हैं, तो ये तो चलता है, this is the real ये तो world, चलता रहेगा. that is all balance of power is Part all of about. real politics. Yeah. Yeah. I use a very, I think I use a very ready word. No, that's correct, sir. Absolutely correct on the line. What's the ideal modus vivendi with China as per the multi-alignment policy of India? I think the general has covered it, so I would request you to give a quick recap because you covered most of the points. When we talk about models with China, I think we should continue to strengthen relations where we are. It's a, like I said, it's a relationship of contradictions, cooperation, right? Coordination, competition, confrontation, conflict, and we should not shy away from any one of them. जहां पर मुझे चाहिए चाइना का को चाहिए तो मुझे लेना चाहिए. Our economy is growing, our commerce is growing. So it is a very it's a relation of contradictions. Right? Yeah. And what you stand It's firm. also, China respects strength पे चाइना को बोलो अगर तुम कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ ही. That is the language he understands. and we also spoke of the 4D strategy. Yeah, This fully strategy. actually, That we need to that, expand one day. yeah, yeah, that's this thing. Okay. The last question, sir, we'll take from Sen Gupta. With great defense research institutes with us, still, why do we lag? Have started late identifying the cutting edge unmanned technology. Iran, Turkey, with so many issues still in rule in this sector. आपके जो क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता है इस पे हमको अलग से एक सेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये की इशू है कि अगले पिछले 75 साल में व्हाई वी लैगिंग इन ऑल दिस. अभी मेक इन इंडिया तो है, आत्मनिर्भरता है, लेकिन व्हाई हैव वी लैक्ड इन इट? टुडे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, like you rightly said, we got equipment from Russia, USA, England, France, Israel, Turkey से स्वीडन, एंड हमारी हमारे जो पुराने सोल्जर की हालत देखो, वी हैव एक्सप्लॉइटेड इट. नॉर्मली इक्विपमेंट इज मेड फॉर अ स्पेसिफिक नीड, और इंडियन सोल्जर्स को देखो, सेलर्स को देखो, उन्होंने उन सबको लेके इक्विपमेंट इतने देशों से मिलके उसको हमने एक्सप्लॉइट किया, इंडक्ट नहीं किया, एक्सप्लॉइट किया है. हमारी जो डॉक्ट्रिन्स हैं, इक्विपमेंट तो डॉक्टर से बेस करते हैं, जो हमारे डॉक्टर से इक्विपमेंट लाते हैं हम तो, लेकिन हम इक्विपमेंट लेके उस डॉक्ट्रिन में इंटीग्रेट कर देते हैं. बट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द पॉजिटिव. आप देखेंगे हमारे जो अभी जो कीवर्ड्स आ रहे हैं हमारे, इंडियन स्पेसिफिक, हम उसको मार्क 1 लेंगे, पहले लेंगे, इंडक्ट करेंगे इक्विपमेंट को, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको हम मार्क 1 देंगे, मार्क 2 देंगे, अपग्रेड करेंगे. So I think things are changing, but we had taken the easier way out, and like I said earlier, thank God for some sanctions put on us. We could become Atmanirbhar on some things, but things are changing. Our structural systems थोड़े से problem थे. Yeah, there's no doubt about it, sir. I've been, I spent some time in this other side of the fence, and a lot of gaps between us. And this is also due to the fact that when we got, You the DG artillery, I've been the DG infantry, and also yeah, the DG. we know this stuff. See, there is also a historical fact that when we became independent, we got all the equipment ready-made and it was given to us, and we didn't have any scientific backing to improve upon it. And that scientific backing and the defense research development and that entire cycle is actually lagging. The nation has progressed, your armed forces have progressed as a result, but your defense research and development and scientific technology has not progressed.
Because of this lag, the armed forces have always found it convenient to go abroad, buy, and incorporate it. At which we are very good, as the general has said. And we've got ahead because you can't wait to defend the country. The defense of the country was prime, and so we went ahead. And this lag has somehow not been taken up. But let me tell you, having said this, I see this lag finishing. I'll give you an example, personal example. He'll also agree with me. 1984, we brought the Bofors gun. After that, till 2014-15, we have not had anything. But आप देखिए, from the time say 2014 to now, we are now 2023, 7 years. That was the time when Sir was the DG and I was the ADG artillery. 2014 की बात कर रहा हूँ. We started 4-5 programs, and all those programs, those guns are in, and those guns are ours. Whether you take K9 Vajra, you talk of the Dhanush, right? You talk of the Pinaka, which are all ours. We are self-sufficient in ammunition. A lot of people, if you say as early as 2010, I remember there's, I'm naming him also, a journalist called Rahul Bedi. He's written out an article in the Hindu. ये भी मैं बता रहा हूँ. मैं अगर थोड़ा याद आए तो डेट भी कोट करूंगा. He's written the headline I can never forget. He said, "We have an artillery in search of guns." 2010 की बात है, right? That was the time I was still a major general and I was working on this Dhanush and all these, various things. 2023, where are we? We are self-sufficient. It's only a matter of numbers they'll roll out. How has this change happened? The gap has been bridged. Right today, if you see Ukraine war, everyone says artillery is the biggest strength in the Ukraine war. You know, and today you have a self-sufficient artillery in India. And if you could do Doklam, and if you could face up to Ladakh, China and Eastern Ladakh in 2020, somewhere we should have been had the self-sufficiency in artillery. We even had the guts to stand up to them. So have confidence in your own abilities and strengths. It's only a matter of time. We have already made an aircraft carrier. We already on the verge. If the Prime Minister's visit becomes successful, you will have the capability to make cutting edge aircraft, fighter aircraft within the next decade. So I think a lot of things are changing. And that is why we are doing this. We've done this exercise of talking of the power matrix, right? Like I said, India has to transit. India is transiting from being a swing state to a balancing power. I've changed my nomenclature: swing state to a balancing power, and that is what we have to mentally shift. I think, sir, we've taken all the questions. Sorry for this long-winded reply in the end, but I thought it just came out naturally from me. So I'm very thankful to you that you went into such great details about this whole story. Your closing comments, and then and I would also like to thank the audience, all those who are listening, who have come out with such thoughtful questions. And you'll agree with me that such level of questions are very rare today in the public. And Thank you very much. I enjoyed the conversation with you, and more importantly, the questions are very very apt, very apt. Each one of them, which is a very good thing. This is the indicator I was talking about when you talk about strategic culture. It is not you and me just making the strategic culture. It is it is all of them. Look at the questions, each one, and I think each one of the questions I could go on and still not be satisfied with. So we can carry it forward. I think but it's not a bad idea if we can mail it to them. Yes, sir. In fact, I've started an open hour on every Sunday where people can ask any question they want on anything. So hopefully that will come through. We've lost. So are we audible? I think we lost Gen Bhatia due to the bandwidth problem. But I think we take his point that we've had a great session today. And all these 3 sessions which I've had so far on the power matrix have been great.
I'd like to thank you, sir. Hello. No problem, sir. We'll thank you, and we'll thank you on behalf of everyone. I would like to thank you, and I'm doing this thanking you live. Thanks a lot, sir. So we've had a great session today, and I'd like to thank everyone. Tomorrow we will do India and Russia in this global matrix with Brigadier Arun Sehgal. So see you tomorrow evening, same time, for a very invigorating session. Thank you, Jai Hind, and good evening.